Hello everyone. Today I am with Priya Bothra. She is a market researcher. एड रिलेटेड रिसर्च किए थे और उसमें सजेशन भी दिए थे कि ये इम्प्रूव हो सकता है एड में. फाइनली जब वो एड रिलीज होता है टीवी पे, आप देखते हो, देन यू कैन टेल पीपल, यू नो, आई डिड दिस, आई हेल्प क्रिएट दिस. So that's a really good feeling, and that's, I would say, is the best feeling, best part of the job for me. Yeah. Sip, what is market research? Market research is what I'm doing when I don't know what I'm doing. So it's basically like being a detective trying to solve a mystery. So typically we talked about the project life cycle of how it starts and how it ends. So if I ask कि what is the difference between the time gap कि पहले AI के आने के पहले how much time did it used to take and after AI how much time is it taking right now? So how would you define that? When we talk about market research, we find there are mainly two types, qualitative and quantitative. And when we talk about LinkedIn profiles, when I was going through all the market researcher profiles, it is always a distinction, and you have worked in both the fields. So what is the main distinction between these two? This field is very less known, right? So let's start with the challenges. कि आपने क्या-क्या challenges face किए when you start as a market researcher? So I think my journey was a bit different from a typical market researcher, because if you notice people who are already in the field, a lot of them, most of them are MBAs, and that's how they kind of get their ticket into the field. For me, I had joined right after graduation. I didn't really know what market research was, if I'm being entirely honest. It was my first job. So let's move ahead to the next question about career paths in market research. What are the different career paths a person can take? Or should I say, when he enters into market research, what is the basic career path he can start from while doing his job? So we have covered the challenges part. Let's move on to the skills part along with it. You have already mentioned two skills which are very necessary. Are the first is the storytelling part, and the second one is the interpersonal skills, correct? So let's move to the other skills. What other skills do you think are necessary? I think to be a successful market researcher, any skill that you'll need, you can learn on the job. Any skill you can pick up. There's nothing that you absolutely need to have the day you start your job, except from modern consumer. So anything related to insights, consumer decision making, qualitative, quantitative research will be beneficial for you to check out. Uh, Especially fundamental courses if you're just starting to get to know the industry. So these courses can be considered as your beginner's guide, right? Yes, For entering absolutely. into market research. Yeah, yeah. So before moving ahead, I want to ask you one question here. You mentioned the qualitative research is mostly about those people who want to interact, who want to know more about other people, right? And quantitative is more about numbers. So you basically are stuck on an Excel or Power BI, let's say. So can I say the qualitative is basically for extroverts and quantitative is for introverts? You have 7 years of experience. Which part of your job you find the most boring part and which part is the most exciting part? Hello everyone. Today I am with Priya Bothra. She is a market researcher. Welcome Priya. How are you? Hi, Prashant. Thank you so much for having me. I'm doing great. So let's start this discussion with your introduction. Please introduce yourself. Sure. So, as you already mentioned, I'm in market research. I've been in the field for almost 7 years now. Most of my career has been with Cantor, where I started off as a project consultant and moved on to senior account manager. And something that you already know, but probably the viewers don't, I've recently moved to the US, which means I've transferred my job. So now I'm working with a company called Trifecta Research. Okay. So let's start with the basic concept. What is market research? Okay. Market research. Market research, if I explain it to you in very fundamental terms, actually, I have a very famous quote that I like bringing up in discussions. Market research is what I'm doing when I don't know what I'm doing. So it's basically like
being a detective trying to solve a mystery. And the mystery that you're more often trying to solve here belongs to different businesses that you're working with who are your clients. So, if I take a very linear, simple example, a business may have a problem, say, declining sales of a particular brand. So, in order to figure out what is causing this decline, they may want to do market research, which is basically trying to understand what's happening with the brand. Are there particular reasons which is why people are buying the brand less, or they're migrating to a different brand, or they're stopping to use the product altogether? All of these are questions that we can figure out through market research. So, market research basically helps you take important decisions with the help of data that you can collect through the research process. Yeah. So I think that's the most simplified definition I can find about market research. So one more thing I would like to ask here before starting with the main questions. When we talk about market research, we find there are mainly two types, qualitative and quantitative. And when we talk about LinkedIn profiles, when I was going through all the market researcher profiles, it is always a distinction, and you have worked in both the fields. So, what is the main distinction between these two? So, market research can take many forms. As you rightly pointed out, there are two main fields within market research. First is quantitative research, which, as the name suggests, is everything to do with numbers. So, if you need the support of numbers, you will go for quantitative research, which involves Okay, using statistical analysis, rating scales, etc., to answer the questions that we have. Whereas with respect to qualitative, we want to rely on thoughts, opinions, and words of others. So that is the major difference how you distinguish. For example, if I ask you a question, um, so how many people are buying this particular product? You will want the answer to be a number, right? So you will hmm, probably go ahead and do a survey if you have questions that require the answer to be a number or a yes. percentage, for example. Again, that's a very simplified description of the two types of research, but I think it's the best way to look at it. ओके सो मार्केट रिसर्च के बारे में अपन ये बोल सकते हैं इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ द मार्केट द लिटरल डिटेल्स ऑफ द मार्केट एंड डूइंग स्टैटिस्टिकल रिसर्च ऑन दैट राइट एंड जब हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव की बात करते हैं क्वांटिटेटिव वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द फिगर्स एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द बिहेवियरल पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स लेट्स से करेक्ट. Absolutely, absolutely right. Yes. Okay, so let's move ahead. Uh, this field is very less known, right? So let's start with the challenges. कि आपने क्या-क्या challenges face किए when you start as a market researcher? So I think my journey was a bit different from a typical market researcher, because if you notice people who are already in the field, a lot of them, most of them are MBAs, and that's how they kind of get their ticket into the field. For me, Okay. I had joined right after graduation. I didn't really know what market research was, if I'm being entirely honest. It was my first job. So, like all first jobs are, I had to learn everything on the job. There was no specific training that was provided to me. There was nobody to explain what market research was all about. We had a really short chapter in college Uh, about market research, okay. but you know how things are. Books are very different from reality. So you Yes. can't really take all those learnings and apply them and move on and work. You have to figure out Yes. everything on the job. So that was extremely critical, being able to ask questions, a lot of questions, even at the cost of seeming stupid. But that's how you figure out, right? If you don't ask questions to someone, you're not going to get the answers that you're looking for. उस Hmm. टाइम पे we didn't really have as much information on the web as we do now. Of course, internet was there. There were sources that you could look up, but finding answers to practical questions was not that easy. So the easiest way would be to just go up to your coworker and ask them what you were struggling with.
This was one of the major struggles. If I talk about challenges in market research, uh, on the job, there are several, but the few top challenges that come to mind first would be the overwhelming amount of data that we have to collect and sift through in order to figure out what applies to our research, what is relevant to us, and what will help us answer those critical questions is, I would say, the one of the biggest challenges. Second would be the data quality. So market research, often people associate it with just a survey or a questionnaire. I'll ask you some questions, you answer it, and that's it. But it doesn't work like that. If your responses are not rich, if you're not giving me details, so if I'm trying to if I'm involved in a qualitative research project, for example, where I'm trying to figure out how someone feels about a particular advertisement. Hmm. Okay, I show you the ad, I want to know how you're feeling, but you end up saying just, it was okay, it was fine. That's not really giving me anything. I want Yes. to know, if it was fine, why did you think so? What in the ad made you feel that way? What are the elements that you're liking? Do you like the storyline? Do you like the music? Maybe you're not okay with the theme that they're presenting. Maybe you think that's very offensive, but you're still saying fine because I am paying you to give me these answers, right? So that is often a very big challenge. We're paying to get research done, but if we don't have rich data, if we don't have right data, we often cannot give the clients the right answers Hmm. or the right responses. When it comes to analysis, when it comes to reporting, storytelling is another challenge. So you've collected all this data, you know what you're going to say. You had a set of research objectives that you started with. Imagine that I'll go back to that advertisement example. So maybe your objectives were that you want to figure out how they feel about the ad, what they like, what they don't like. Simple objectives. But when you're presenting to clients, they're often not very research savvy. So as a researcher, it's your responsibility to make sure that they understand what we're presenting and they're able to do something with that information. So, since I'm not involved in the field that you are involved in, if you tell me, if I ask you about a financial concept that I'm not aware of, and you throw a bit of jargon at me, I'm not going to understand it. So, you Yes. have to break it down in a language that the client understands. You have to present it in a flow that is easy for them to digest. So we call it storytelling with data. It's very important to tell your story through the data. It has to have a very cohesive, natural flow so that they can also come through with you in the journey that you were in when you were collecting that data. Because they were not with you when you were doing those surveys or doing those focus groups. So to recreate that environment, to make sure that they're able to come up with actionable points that they can actually do something with is a challenge, and it's not something that everybody is naturally good at. So it's something that again you learn on the job. Okay. So, if I try to summarize this, we can say कि the major challenges जो हम face करते हैं while doing market research is first of all हमें data मिलना, correct data मिलना is one of the difficulties. Then next stage पे when we have the data, उसको analyze करने के लिए even when we have AI, when we have good servers, there is some human interaction necessary, and वो human interaction के time पे there are issues with the data, correct? There is a lot of human interaction necessary. So we'll get to AI eventually because it's a Yes. hot topic in our industry too. But even with AI, you absolutely 100% need manual intervention, especially when it comes to qualitative research. You need interpersonal skills. You need to be able to Hmm. interact with people because qualitative, like I was saying earlier, is all about opinions and thoughts. Now, as you know, AI is not very accurate when it comes to doing a sentiment analysis or Yes. catching. So, in qualitative research, even gestures are really important. If you're making Hmm. a face, if you're Non-verbal rolling your eyes, communication. yes, Hmm. non-verbal cues are extremely important, and that's not something that can be automated accurately as yet. Hmm. Agreed.
And then the comes the storytelling part, जहाँ पे भी we face difficulties because not everyone has that skill, not everyone has learned that. Correct. So these are the major three challenges which you face while doing market research, quantitative market research. And as you explained about qualitative, कि non-verbal communication, non-verbal cues को समझना is also a very difficult thing, right? So Yeah, most of these challenges apply to both types of research, but for qualitative, yes, it's very important that you're observant and you have good interpersonal skills. So we have covered the challenges part. Let's move on to the skills part along with it. You have already mentioned two skills which are very necessary. Are the first is the storytelling part, and the second one is the interpersonal skills. Correct. So let's move to the other skills. What other skills do you think are necessary? I think to be a successful market researcher, any skill that you'll need, you can learn on the job. Any skill you can pick up. There's nothing that you absolutely need to have the day you start your job, except from being a self starter, as cliche as that sounds, because, like I mentioned in my case, I had to learn everything on the job. So if you are like me, if you are in a similar situation, it's extremely important that you're open to learning and you're open to asking questions, you're open to making a fool of yourself. That's extremely important. Not really a skill, but something that will come in handy. If I talk about skills in particular, storytelling skills are crucial, जो हमने already cover करा है. एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी टाइप ऑफ डेटा जब एनालाइज करते हो इट्स important that you're able to make sense of it yourself. Otherwise, how do you expect to explain it to your clients and how do you expect to recommend to them what they should do, right? Agreed. So, data analysis skills are important. Statistical knowledge is important if you want to get into quantitative research in particular. So there are, again, it depends upon the kind of research that you're involved in, but for in every research there will be some element of it that will be statistical in nature during the Agreed. analysis phase. So it's good to know, and it will get you farther if you have that already. So we use a lot of correlation, regression, uh, pricing models, etc. तो वो सब अगर पहले से आता हो तो आपके लिए बहुत बड़ा advantage है. Other than Okay. that, life as a market researcher is challenging because you're always under pressure and you have multiple projects ongoing at a time. The clients wanted something yesterday, आज वो आके आपको बोल रहे हैं और आपको डिलीवर करना है कल. तो मतलब हमेशा बहुत बड़ा बोझ रहता है. सो बीइंग एबल टू मैनेज ऑल ऑफ दैट, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू हैव एन ओवरव्यू ऑफ हर एक प्रोजेक्ट कौन से स्टेज पे है, आपको क्या करना है, दूसरे टीम मेंबर को क्या करना है. The whole team has to come together as a unit. Depends upon the different roles and different organizations, but typically ऐसा ही होता है. अदर देन दैट, विजुअलाइजेशन स्किल्स बहुत बड़ा प्लस होगा अगर आपकी अच्छी है. इन माय केस हम लोग टिपिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए वी यूज टू यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड वर्ड फॉर प्रेजेंटिंग, पावर पॉइंट. Qualitative के लिए mainly PowerPoint, but being able to create compelling slides, clean slides that have consistent formatting, it goes a long way. I have seen both types of reports. One that is really strong, has all the right numbers, all the right insights, but looks like crap. And I've Hmm. seen really beautiful reports that are, just take your breath away, but don't have anything of substance to say. तो उसका बैलेंस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ समथिंग लुक्स गुड, डेफिनेटली जब आप उसको देखते हो समझने की कोशिश करने का मन भी करता है, बट अगर कुछ देखते ही आपको नहीं समझ आ रहा है तो मतलब वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्लाइंट को भी एक्सप्लेन करना एंड प्रेजेंट करना. तो डेटा विजुअलाइजेशन आई वुड से इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड अ नाइस स्किल टू हैव, एंड इट वुड डेफिनेटली गिव यू एन एज इन द फील्ड. Okay. Since we are in line, we have talked about challenges, we are talking about skills.
So let's talk about the courses and certification part as well. You have told key pricing models are very important. Some softwares that can be learned from different sources are also very important while doing market research, and interpersonal skills and other skills as well. So tell us about what the courses or certifications you have done that may or may not be relevant to market research, but you think they were helpful, and what people can do uh, to enter into market research. Okay, a very pertinent question, but again I'll answer entirely from my experience क्योंकि मेरा जैसे मैंने बोला typical case नहीं था. Uh, so when I joined Cantor, I was the only, not only, I was part of a small batch of people who had joined right after graduation. Okay, मेरा BCom finish होते ही मैंने join करा था. But when I went to work the first day, I realized everybody else was an MBA, at least. So typically ये baseline होता है कि at least एक MBA degree होती है तो it's better because often when you search for a job in market research, that is one of the qualifications, at least in India, that you need. Okay. अ, उसके अलावा अगेन आपका अगर स्टैट्स बैकग्राउंड है आपको क्वांट रिसर्च में जाने में बहुत आसानी होगी. फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च वी ट्राई एंड लुक फॉर पीपल हु हैव अ सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी or psychology kind of a background because again these people are typically interested in knowing more about people. That's what you Mm, think because these courses are all related to people and communication जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सब थोड़े बेस लेवल्स होते हैं. उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनी specific degrees in market research or specializations in market research. But I did a Google search the other day. There are a couple of courses. There are a lot of courses that you can do, not necessarily degree courses, but uh, that's not a criteria for you to get a job in market research. But it's all good to have because you'll get to learn more about what market research is all about. तो बहुत हेल्पफुल होता है. एक मैंने देखा था IIM बैंगलोर का कोर्स है okay. which is called edX's quantitative marketing research. There Okay. are other courses like there's one that's offered by Mudra Institute of Communication in Ahmedabad. There's one that's offered by IIPMR, Certified Research Analyst. I haven't done a deep dive into these courses, but they seem to be focused specifically on market research. So it might be beneficial for someone who's looking to get into the field to know more about them. उसके अलावा यूजुअली आजकल जो लोग करते हैं कि अगर आपको कोई फील्ड में घुसना है तो बेसिक रिसर्च करने के बाद यू वुड वांट टू नो अ बिट मोर. यू टॉक टू पीपल इन द रिसर्च field or you look at courses, you look at short courses so that you get a flavor of what it's all about and then you can make an informed decision for yourself. तो सिमिलरली मार्केट रिसर्च के लिए बहुत सारी कोर्सेज है. लिंक्डइन लर्निंग पे मैंने पर्सनली बहुत सारी कोर्सेज करी है रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट पे है, डेटा विजुअलाइजेशन पे बहुत सारी कोर्सेज है. there's a lot of courses in Skillshare, data camp, Udemy, etc. that you will find. Um, कुछ कुछ जो मैंने लिखी थी, कंज्यूमर बिहेवियर ट्रेंड्स, मीट द पोस्ट मॉडर्न कंज्यूमर. सो एनीथिंग रिलेटेड टू इनसाइट्स, consumer decision making, qualitative, quantitative research will be beneficial for you to check out. Uh, Especially fundamental courses if you're just starting to get to know the industry. So these courses can be considered as your beginner's guide, right? Yes, For entering absolutely. into market research. Yeah, yeah. Okay. So before moving ahead, I want to ask you one question here. You mentioned that qualitative research is mostly about those people who want to interact, who want to know more about other people, right? And quantitative is more about numbers. So you basically are stuck on an Excel or Power BI, let's say. So can I say that qualitative is basically for extroverts and quantitative is for introverts? That's an I would say that's an oversimplification.
I technically categorize myself as an introverted person, but I started off in quantitative research and I quickly moved to qualitative research. I've done both. Okay. So I think it would help with your introverted nature if you're trying to be more extrovert. If you get into qualitative research, because in my case, I was given a lot of opportunity to have direct interactions with people. So, which is what we call moderation. Hmm. विच इज बेसिकली अगर आप कोई फोकस ग्रुप कर रहे हो तो जो पर्सन मॉडरेट करता है या लीड करता है डिस्कशन कि किसके बारे किस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है एंड व्हाट विल बी द ग्राउंड रूल्स एंड द पर्सन हु विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस और टेलिंग यू द टॉपिक्स इज द मॉडरेटर टिपिकली सो Yeah. क्वालिटेटिव रिसर्च में आप मोस्ट कंपनीज में दिस इज द ट्रेंड दैट आई हैव नोटिस दे विल एनकरेज यू टू डू अ लॉट ऑफ मॉडरेशन क्योंकि Okay. ये करने से क्या होता है यू आर क्लोजेस्ट टू द डेटा आप खुद अगर Hmm. क्वेश्चंस पूछ रहे हो आपके सामने सारा डिस्कशन एनफोल्ड हो रहा है तो यू विल हैव अ बेटर ओवरव्यू ऑफ द काइंड ऑफ डेटा दैट यू आर कलेक्टिंग तो रिपोर्ट राइटिंग में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है एंड it's a great skill to have. You get to meet so many people, you get to interact with them, you get to understand their opinions, so it's a lot of fun also. तो introverts and extroverts ऐसा बोल सकते हैं but I think That can't managed be concept considered as a base. Hmm. हाँ cannot be. Okay. So we have discussed challenges, we have discussed skills, we have discussed courses, and with me, you have also done an extensive research on courses as well. So let's move on to the software part. Uh, Generally in India, आपको कौन से सॉफ्टवेयर लगते हैं कि आर मोस्टली यूज्ड इन दी रिसर्च कंपनीज एंड जो कि बाहर से लर्न किए जा सकते हैं यूजिंग पेड और मे बी फ्री कोर्सेज ऑन यूट्यूब? Hmm. ओके अगर मेरा आंसर विल बी टिपिकली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस हर एक कंपनी के पास अलग अलग सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन होता है ओके. और हर एक कंपनी जो बड़ी कंपनीज होती है बिग नेम्स इन द इंडस्ट्री लाइक कैंटर वाज अ बिग नेम सो कैंटर हैड अ लॉट ऑफ इंटरनल सॉफ्टवेयर ऑल्सो जो उन्होंने खुद इन हाउस डिजाइन किया था विच इज नॉट ओके. समथिंग दैट यू कैन लर्न बाहर से या ऑनलाइन सर्च करके ओके. तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको ऑन द जॉब ही सीखने पड़ेंगे बट अदरवाइज जो आपकी बेसिक्स होती है माइक्रोसॉफ्ट सूट एंड गूगल सूट विच इंक्लूड्स योर एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड आउटलुक टीम्स ये सब आपको ढंग से आना चाहिए तो आना ही चाहिए क्योंकि आपका एवरीडे काम उसी में होने वाला है यस. so it's extremely important that you're at least decent and familiar with Excel and PowerPoint at the very least. उसके अलावा एनालिसिस के लिए हम लोग जो रेडिली अवेलेबल सॉफ्टवेयर यूज करते थे दैट वाज सॉफ्टवेयर कॉल्ड सर्वे रिपोर्टर विच इज फॉर डेटा एनालिसिस जहाँ पे आप डेटा फीड करते हो डेटाबेस फीड करते हो एंड फिर यू रन डिफरेंट क्रॉस टैब्स एंड एनालिसिस ऑन दैट ठीक है फिर आपके पास है SPSS जो कि वाइडली यूज होता है विच इज समथिंग दैट हैव नोटिस्ड पीपल इन द यूएस आल्सो यूज अ लॉट अगेन ओके. दैट्स अ data analysis statistical modeling tool which is readily available that you can learn on your own. Power BI is being used a lot. Tableau is being used a lot. It's not something that I used in Cantor, but in a lot of other market research firms, it's something that I've noticed a lot of them use. ठीक है बहुत सारे आजकल क्या होते हैं डेटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म जो होते थे जैसे सर्वे मंकी हो गया टाइप फॉर्म हो गया ये सब जो कंपनीज यूज करती है वो लोग भी अपना खुद का एनालिसिस प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रहे हैं तो ओके. इट्स वेरी नेचुरल कि जो कंपनीज उसको डेटा कलेक्शन के लिए यूज करेगी वो एनालिसिस के लिए भी यूज करेगी तो वो भी अगर आपको आता है तो आपके लिए बेटर है आप जिस कंपनी के लिए टारगेट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है वो कौन सी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बट सॉफ्टवेयर अभी बहुत एंडलेस है एंड अ लॉट ऑफ new companies are also getting into the field. Like if I talk ओके. about the US particularly, when I was looking for a job in the US, I noticed that the kind of applications and software that they use here Hmm. are very different. They use something called Qualtrics for qualitative analysis. हम लोग कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते थे qualitative analysis के लिए ओके. कंप्लीटली मैनुअल था वो तो हमारे पास ऐसे वर्ड डॉक्यूमेंट में ट्रांसक्रिप्ट आते थे ट्रांसक्रिप्ट इज बेसिकली जो आपका डिस्कशन हुआ उसका नोट्स कह लो या मतलब वर्बैटिम लिखा जाता था
कि पर्सन एक्स सेड ये पर्सन वाई सेड ये एंड देन इट्स अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हाट हैपेंड इन द डिस्कशन. उसको लेके हम लोग अपना एनालिसिस ग्रिड प्रिपेयर करते थे एक्सेल में, क्योंकि हम लोग एक पर्सन से बात नहीं करते हैं, 10 लोग 50 लोग से बात Yes. कर रहे हैं. Mm, तो यू कैन नॉट गो वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट आफ्टर वर्ड डॉक्यूमेंट, आपको याद नहीं रहेगा इन्फॉर्मेशन. yes. तो बट वो सब हम मैनुअली करते थे. यूएस में हर चीज के लिए टिपिकली टूल्स अलग अलग यूज होते हैं. पॉलिटिक्स मैंने एक ऑलरेडी मेंशन करा. आजकल एनालिसिस के लिए बहुत सारी एआई टूल्स यूज हो रही है. कोलोप इज अ टूल दैट वी बीन यूजिंग इन माय न्यू कंपनी. Okay. A lot of people are also using chat gpt etc, but उसके अलग अलग versions आते हैं जिसमें data Yes. confidentiality is supreme. You cannot compromise on data confidentiality. Yes. So all of these softwares that are typically designed to Maintain privacy. yes. Okay. So let's move ahead to the next question about career paths in market research. What are the different career paths a person can take? Or should I say, when he enters into market research, what is the basic career path he can start from while doing his job? So, market research is a huge industry. Within market research, there are different types of roles that you can get into depending upon your interest alone. So, Okay. एक तो रिसर्च हो गया टिपिकली कि आपको रिसर्च रिलेटेड रोल में जाना है. उसके अलावा वी हैव टीम्स दैट आर डूइंग फील्ड वर्क. फील्ड वर्क इज बेसिकली जो डेटा कलेक्शन हो रहा है, जो लोग एक्चुअली जाके लोगों से सर्वे भरवा रहे हैं एंड उनको रिक्रूट कर रहे हैं कि किस टाइप का पर्सन सही रहेगा इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए. ठीक है. Okay. तो वो हो गया फील्ड वर्क पार्ट ऑफ मार्केट रिसर्च. देन देर इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट. सो देर इज समवन हु मैनेजेस ऑल द प्रोजेक्ट्स. उसके बीच में अलग अलग जो डिफरेंट डिविजन्स है जो इन्वॉल्व है विद इन अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट, उनमें कोऑर्डिनेशन का काम होता है. कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, हर एक का स्टेटस क्या है, क्लाइंट को स्टेटस अपडेट भेजना है. ऑल दैट इज द जॉब ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर. देर इज अ कॉस्ट एंड फाइनेंस डिवीजन ऑल्सो, जो लोग आपके बजट्स बनाते हैं, कॉस्टिंग करते हैं. वो विद इन अ कंपनी ये रिसर्चर का जॉब भी हो सकता है या फिर ये Okay. कम्प्लीटली सेपरेट भी हो सकता है. तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनी दैट यू आर एमिंग फॉर एंड उनका क्या Okay. स्ट्रक्चर है या रूल है. ठीक है. फिर Okay. होता है बिजनेस डेवलपमेंट, जो लोग क्लाइंट्स लेके आते हैं. अगेन कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. हो सकता है ये एक अलग रोल नहीं हो, रिसर्चर का जॉब भी हो सकता है. व्हेन यू बिकम अ बिट सीनियर, you will have your own targets to meet. You are also supposed to bring in new business for the team. तो तब आपको बिजनेस डेवलपमेंट का काम भी करना पड़ेगा. कि प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स आप बात करो, उनकी प्रॉब्लम समझो, try to understand if they have a research need, and then you onboard them with your particular company. उसके अलावा यू कैन बी अ मॉडरेटर, जो कि हमने ब्रीफली डिस्कस किया था पहले. अगेन यू नीड interpersonal skills. Ideally, you should also be qualified. There are certain certification courses for moderation that are preferred by a lot of clients, a lot of big names in the industry. तो मॉडरेशन में आप जा सकते हो. इफ यू कैन गेट इनटू ट्रांसक्रिप्शन, यू कैन गेट इनटू ओनली डेटा विजुअलाइजेशन पार्ट. सो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड रोल्स होते हैं. But if we focus on the most common one, that is if you want to get into a purely research based role, again you have two options to choose from: qualitative and quantitative. Depending upon your skills and your interest, you can get into either of the two. uh, Let me briefly tell you about my journey a bit so that you get an idea कि Yes. typical path कैसा होता है. Like I mentioned, I had joined as a project consultant, which was on a Okay. contractual role. ठीक है. उस टाइम पे I realized it's not very different from any entry level job within market research जो कि एक MBA कर रहा था. There was really no difference other than my qualifications and theirs. Our responsibilities are the same. Uh, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है एज यू ग्रो इन टू द ऑर्गेनाइजेशन. यू डोंट रियली डू एनीथिंग डिफरेंट. वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है. मेरे केस में
आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन पर्टिकुलर क्लाइंट, जिसके अंदर जितने प्रोजेक्ट्स आते थे वो मेरी टीम हैंडल करती थी. हो सकता है विद इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन यू आर हैंडलिंग मल्टीपल क्लाइंट्स, सो इट रियली डिपेंड्स. सो आई स्टार्टेड ऑफ एज अ प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, देन आई वाज प्रमोटेड टू अ रिसर्च मैनेजर. उसके पहले देयर समथिंग कॉल्ड एन एसोसिएट रिसर्च मैनेजर. After research manager you get to senior research manager, you get to account manager, then you get to senior account manager, go on. So within Cantor is a big organization, so it's very hierarchical in nature. There are a lot of levels that you can reach. तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है टिपिकली आपको उतनी बार प्रमोशन के चांसेस है, उतनी सीनियोरिटी मिल सकती है. जितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बुटीक एजेंसीज होती है, उसमें यूजुअली थोड़ा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है कि एंट्री लेवल एनालिस्ट हो गया, उसके ऊपर सीनियर हो गया, उसके ऊपर आपको थोड़ी अकाउंट मैनेजमेंट आपका हो गया जब आपको टारगेट्स मिलते हैं फॉर द टीम. आप कुछ क्लाइंट्स खुद से हैंडल कर रहे हो, सिर्फ आपकी टीम हैंडल कर रही है. यू हैव मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस डेवलपमेंट ऑल्सो. ठीक है, तो वो आपका अकाउंट मैनेजमेंट वाला लेवल हो गया. एंड देन यू गेट इनटू द सीनियर लेवल्स जो कि डायरेक्टर हो गए वगैरह. तो जैसे जैसे ऊपर जाते हो आपका डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाता है. यू आर मोर फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग इन न्यू बिजनेस एंड मेंटेनिंग क्लाइंट रिलेशनशिप्स. सो बेसिकली वी कैन से कि जो करियर पाथ है कोई भी पर्सन का इन अ मार्केट रिसर्च मेनली डिपेंड्स ऑन 2 to 3 फैक्टर्स. पहला, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है. दूसरा, आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है जिसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. एंड थर्ड वुड बी द साइज ऑफ द firm in which you want to go, whether is it a boutique, whether it is a corporate industry firm, anything, right? So these are the basic factors. राइट. Okay. So let's move on. Uh, Market research is a very less known domain. You won't find a market researcher, randomly meeting you anywhere, like engineers or maybe CAs, right? So what are the major misconceptions about a market researcher or about the market research domain? You're absolutely right, which is why I think you're very lucky that you found me to do this episode with. Yes, agreed. Market researchers are hard to find because it's not a field that everybody knows about. इसका रीजन मेरे ख्याल से ये है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोर्सेज सर्टिफिकेशंस नहीं है जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे. कॉलेज में भी बस एक चैप्टर था, इट wasn't really इंटायर सब्जेक्ट ऑल टुगेदर ऑल्सो. तो Hmm. आपको ज़्यादा पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ है भी जो मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ. तो बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं. मतलब व्हेन आई हैड जॉइंड, एक तो मुझे खुद को नहीं पता था इनिशियल फ्यू वीक्स कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या होता है. एक महीने में थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना स्टार्ट हुआ. तो इनिशियली जब मेरे को कोई पूछता था तो हर किसी का मार्केट बोलते ही सबको लगता है मार्केटिंग रिलेटेड जॉब है. दैट इज द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन. इट हैज some bits are to do with marketing in a sense कि आप marketing materials related भी research करते हो, but you're not marketing any products. so आप marketing में Hmm. exactly नहीं हो. तो ये तो बहुत ही common misconception है. उसके अलावा जब आप research बोलते हो तो लोग scientific research समझते हैं, जो कि अगेन अपने में ही completely अलग Yes. डोमेन है. तो ये जो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ confusion and misconception. But simple terms में जो मैंने समझाया, market research is like being a detective or a doctor for your client, where you are trying to understand the problem and then fix the problem. So you're diagnosing it and then you're fixing it. So I want to ask one question here. When you are talking about being a doctor or being a detective, you are saying कि पहले मैंने client की problem को understand किया, then I'm doing the research and then I'm giving him the solution. So don't you think that is also the job of a management consultant? There are a lot of similarities between consulting and market research, but the type of problems that are being handled by the two fields Hmm. are very different. Okay, so that's कंसल्टिंग the में major टिपिकली difference. आप, हाँ, क्योंकि मार्केट रिसर्च में आप मेनली ब्रांड्स या प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहे हो. कंसल्टिंग में इट्स मोर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बेस्ड.
So Okay. there are similarities, but these are two different fields altogether. So let's move on to the future of market research aligning with AI. In every domain, there are talks about people losing their job because AI has come. AI can make conclusions. As you have also mentioned, there are several AI tools used by many organizations in America, in India. So, what do you think is the future of market research when it comes to AI? AI is everywhere. You have to accept that. You have to get on board with it. You have to know more about it if you want to do well in your field. Uh, like every other field that AI has taken over, it has really gotten into market research as well. So India may I'm not really sure, but I'm pretty sure most of the big and actually small organizations also किसी पार्ट ऑफ द प्रोसेस में एआई को इंटीग्रेट कर लिया है क्योंकि इट हैज़ वे टू मैनी बेनिफिट्स टू इग्नोर। ठीक है, एक तो आपका टाइम कम लग रहा है। कोई भी चीज़ अगर आप जो मैनुअली करते थे उसको ऑटोमेट कर रहे हो तो 100% आपका टाइम कम लगेगा ही। टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट भी बचेगा। एंड ये दो चीज़ें हर किसी को चाहिए, कोई भी जॉब हो, कोई भी प्रोफेशन हो, राइट? यूर ऑलवेज लुकिंग टू reduce time, you're always looking to cut costs, which is what AI helps you do. मार्केट रिसर्च में थोड़ा ट्रिकी है एंड इनिशियली काफी लोग स्केप्टिकल थे बिकॉज ऑफ द मेजर challenge that I mentioned to you, which is retaining data confidentiality and ensuring that everything is confidential and not getting leaked in any way. क्योंकि हम लोग जो data collect करते हैं, that is coming from people, so we cannot Hmm. compromise that in any way. We cannot half ass that. तो उसके लिए AI related बहुत कंसर्न्स थे। अभी उससे रिलेटेड पॉलिसीज इन प्लेस आ रही हैं फॉर अ लॉट ऑफ दी सॉफ्टवेयर दैट आर प्रमोटिंग एआई रिलेटेड टूल्स। तो एआई के मतलब सो हमारा एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता है, राइट? लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। Okay. फर्स्ट स्टेज हो गया जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, वो आपको बता रहे हैं एक्स वाई जी प्रॉब्लम है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप एक प्रपोजल बनाते हो कि ठीक है, मैंने क्लाइंट की प्रॉब्लम सुन ली, अब मैं किस तरीके से सोल्यूशन निकालूंगी, व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट Okay. एम आई लुकिंग टू सॉल्व एंड हाउ विल आई सॉल्व इट। दैट इज व्हाट वी इंक्लूड इन अ प्रपोजल टू द क्लाइंट। नाउ सपोज क्लाइंट ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ तुम आगे जाओ रिसर्च करो, ठीक Hmm. है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप ढूंढते हो आपके लिए कौन सही लोग होंगे जिनसे आप बात कर सकते हो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप एक क्वेश्चनर बनाते हो या डिस्कशन गाइड बनाते हो कि मुझे एक्स वाई जी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कौन से क्वेश्चंस पूछ के ये इन्फॉर्मेशन उनसे निकाल सकती हूँ। Hmm. फिर आपका एक्चुअल डेटा कलेक्शन होता है, फिर डेटा आने के बाद एनालिसिस होता है और फिर हम लोग क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Okay. टिपिकली मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं किया है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट टिपिकली ये स्टेजेस होते हैं विद इन अ Okay. टिपिकल रिसर्च प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। एआई को आप ऑलमोस्ट हर स्टेज में इंक्लूड कर सकते हो। Hmm. कैसे? अ, जब आप प्रपोजल बना रहे हो, एआई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द राइट अप्रोच फॉर इट। इट कैन गिव यू इनोवेटिव अप्रोचेस टू टेक। अगर आपकी बहुत यूनिक प्रॉब्लम है जो टिपिकली आपकी कंपनी में किसी ने थ्रू रिसर्च सॉल्व नहीं की है, एआई कैन हेल्प गिव यू आइडियाज। इट कैन हेल्प डू सेकेंडरी रिसर्च फॉर यू कि ये प्रॉब्लम को पास्ट में कैसे सॉल्व किया गया है, इससे रिलेटेड क्या इंटरनेट पे ऑलरेडी डेटा है, आर देयर एनी सोर्सेज दैट यू कैन लुक इनटू टू बी मोर इन्फॉर्म्ड। सो दिस इज वेयर एआई कैन कम इनटू द पिक्चर। It can also help you design the proposal in PowerPoint. So you have all of your points, you put it into the software and it generates a presentation for you. Then you can do whatever you want with it. You can improve it further, you can send it as it is. फिर आपका जो प्रोसेस होता है फिगरिंग आउट द टारगेट ग्रुप, अगर आप उसको बताते हो कि मेरी एक्स वाई जी ब्रांड से रिलेटेड रिसर्च है, ये प्रॉब्लम है, इट कैन टेल यू कि आपकी टिपिकल ऑडियंस कौन होगी। तो अगर आपको टारगेट ग्रुप का आइडिया नहीं, आपको वो उस चीज में भी हेल्प कर सकता है। डेटा कलेक्शन में भी हेल्प कर सकता है। नाउ देर आर टूल्स दैट आर
ट्रिमेंडस, मतलब आपने क्वेश्चन है डाला, आपने नंबर डाले कि मुझे एक्स वाई जी पर्सन से बात करना है, उनको फोन आएगा, एआई बैठ के पूरा इंटरव्यू कर रहा है। तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। जो आप मैन्युअली करते थे, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी को पैसे देने की, सॉफ्टवेयर आपके लिए करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मैन्युअली जब आप करते हो, आप डेटा कलेक्ट करके भेजते हो, उसका डेटाबेस बनेगा, आप उसको डालोगे, एनालाइज करोगे, बहुत टाइम लगता है। एआई के थ्रू अगर आप कर रहे हो छोटे कार्यों के लिए, इट कैन जनरेट समरीज इंस्टेंटली। उसने एक कॉल किया, जो भी डेटा कलेक्ट हुआ, आपको पूरा ट्रांसक्रिप्ट भेज देगा, समरी बना के भेज देगा। तो दैट रिड्यूसेस सिग्निफिकेंट टाइम। एनालिसिस में हेल्प कर सकता है, समरी जनरेट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करने के लिए, की इनसाइट्स बताने के लिए, राइटिंग में हेल्प कर सकता है। आप जैसे रिपोर्ट लिखते हो, आपने सपोज बोला दे लाइक द एड, दैट्स नॉट रियली गिविंग मी एनीथिंग। Any अगर insight? मैं उसको और डिटेल देती हूँ, वो आपके लिए अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकता है बेहतर तरीके से। एंड लास्टली, डेटा विजुअलाइजेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रहा, जैसे प्रपोजल स्टेज में वो आपके लिए रिपोर्ट प्रेजेंटेशन जनरेट कर सकता है, सिमिलरली रिपोर्ट में भी आपके लिए कर सकता है। आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, आपके लिए प्रेजेंटेशन नोट्स जनरेट कर सकते हैं कि दिस इज हाउ यू कैन टॉक अबाउट इट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। हाई लेवल समरी जनरेट कर सकता है। तो एआई का बहुत लेवल पे यूज है, एंड बहुत लेवल पे ऑलरेडी यूज होने लगा है इन अ लॉट ऑफ कंपनीज, इट्स इनएस्केपेबल। एक पार्ट जिसमें हमने सोचा था एआई नहीं आएगा, बट अब शुरू हो चुका है, एटलीस्ट इन द यूएस, दैट इज द ट्रेंड दैट आई एम नोटिसिंग, इज इन क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज एंड मॉडरेशन। Okay. मॉडरेटर टिपिकली, जैसे मैंने बोला, इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, वैसा पर्सन चाहिए जो कि आपको कंफर्टेबल फील करा सके, तभी आप Hmm. उनको आसानी से बात कर पाओगे, अच्छा Yes. डेटा निकलेगा। बट इसमें भी अब एआई आ चुका है। तो मतलब Okay. आपको हर आपको काफी स्टेजेस पे, जैसे एनालिसिस स्टेज पे, हर लेवल पे चाहिए टू इंश्योर दैट एवरीथिंग बीइंग डन बाय द एआई इज करेक्ट। But a lot of things are and can be automated by AI right now. So at this point, I can say कि, as you said, AI is inescapable. You have to learn skills, and AI also generate a new source of employment by you learning prompt engineering, so that you know how to give command to AI, so that it can give you adequate, right, accurate results. Correct. Yeah, that's a great skill to have, especially now, because even Hmm. for your own personal benefit, I think prompt generation is a skill that everybody should pick up for sure. Agreed. Agreed. So typically we talked about the project life cycle of how it starts and how it ends. So if I ask कि what is the difference between the time gap कि पहले AI के आने के पहले how much time did it used to take, and after AI how much time is it taking right now? So how would you define that? That's a very pertinent question. It really depends कि आप एआई कौन कौन से स्टेजेस में यूज कर रहे हो। अगर आपने सब कुछ ही ऑटोमेट कर रहा है, तो सिग्निफिकेंटली इट कैन डू reduce as much as 50% of your timeline. बट Okay. अगर आप सिर्फ एनालिसिस फेज में यूज कर रहे हो, तो मे बी अ 10 to 20% डिफरेंस, विच इज सिग्निफिकेंट फॉर अस। क्योंकि Hmm. जैसे मैंने पहले बोला, हमेशा बहुत प्रेशर रहता है। तो स्पेशली फॉर स्टडीज और रिसर्चेज विद द शॉर्टर सैम्पल साइज, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लोगों को रीच आउट नहीं करना है, तो मतलब अगर आपको पहले एक हफ्ता लगता था, तो हो सकता है 2-3 दिन में भी पूरी स्टडी टर्न अराउंड कर सकते हो। Okay. Understood. So I think we have come to the end of our session. One last question that I want to ask here is, you have 7 years of experience. Which part of your job you find the most boring part, and which part is the most exciting part? Hmm. Interesting question. Uh, it's interesting, it's very funny. When I was applying to jobs here in the US, this is a question I would typically encounter, and I was never prepared for, because it's not a question that you would expect in an Yes. interview. Why will they ask you Hmm. that? But after
having heard it multiple times now, I realize they ask this because they want to know कि आपका इंटरेस्ट कौन सी चीज में सबसे ज्यादा है and किस में आप कम एफर्ट डालोगे probably. तो मेरे केस में बोरिंग सबसे ज्यादा मुझे लगता है एडमिन रिलेटेड काम जो कि हम लोग करते थे, कॉस्टिंग वगैरह. दैट्स नॉट एग्जैक्टली एडमिन रिलेटेड, बट आई डोंट रियली एंजॉय द कॉस्टिंग पार्ट ऑफ द जॉब. That was a part of my role earlier. I also didn't enjoy ये सब जो छोटे मोटे स्टेप्स इन बिटवीन, डेटा क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना. इनिशियली मुझे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी. अब थोड़ी थोड़ी आई एम गेटिंग इनटू इट बिकॉज आई फिगर्ड आउट वेज टू काइंड ऑफ मेक इट मोर एफिशिएंट एंड क्विकर फॉर मी. So it's much better now. What I find most exciting, especially in qualitative research, is moderating, being able to talk to people, meet a lot of different people, build a rapport with them, and get them comfortable with you, get them talking to you. I also really enjoy the analysis part of the project. जब आपके पास दुनिया भर का डेटा है, तो going through all of that, trying to put together pieces of the puzzle, and finally जब वो report बनती है and you realize okay you solved a problem. एंड द बेस्ट पार्ट वुड बी व्हेन यू नो आपके रिसर्च से क्या इम्पैक्ट हो रहा है. तो अगर मैंने एक ब्रांड के लिए रिसर्च किया है, आइडियली उस ब्रांड को, आइडियली नहीं बट उस ब्रांड को उस रिसर्च से कोई फायदा होना चाहिए, राइट? बिकॉज इसीलिए वो रिसर्च करा रहे हैं. तो आगे जाके उस रिसर्च को वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली exciting. Yeah. A lot of times you don't get visibility into that part, which is very significant. बट जब आपको पता चलता है, जैसे मैंने कुछ कुछ एड रिलेटेड रिसर्च किए थे और उसमें सजेशन भी दिए थे कि ये इम्प्रूव हो सकता है एड में. फाइनली जब वो एड रिलीज होता है टीवी पे, आप देखते हो, देन यू कैन टेल पीपल, आई डिड दिस, आई हेल्प क्रिएट दिस. So that's a really good feeling, and that's, I would say, is the best feeling, best part of the job for me. Yeah. Any specific ad which you would like to tell us? I can't. Confidentiality, I can't. Okay. So thanks a lot, Priya, for joining today. I think it was the most simplistic, most informative discussion that one can have on market research, a career in market research. So thanks a lot. Thank you so much, Prashant. It was lovely talking to you. I help people get something out of this conversation. The intent was to inform. So I hope thoda helpful raha ho. And yeah, thank you so much for having me. Thank you. Goodbye.